Hello friends, so let's discuss the one more new disease that is nothing but our irritable bowel syndrome. So it is a not disease, it is a functional disorder. So it is a functional disorder of colon. So just we have discussed the irritable inflammatory bowel disease in my recent video. Now let's see the irritable bowel syndromes. Inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome IBD and IBS दोनों ही सेम दिख रहे हैं, दोनों ही सेम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में लग रहा है, बट बोथ आर डिफरेंट. इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिसीज ये अलग से आता है, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है. बट इरिटेबल बबल सिंड्रोम इट इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ कोलॉन, ओके, ऑफ colon where there is irregular pattern of peristaltic movement. So due to irregular pattern of peristaltic movement there is a constipation and diarrhea both. So both predominant features seen in this irritable bowel syndromes. So you can see here due to the you can say irregular behavior pattern of peristaltic movements, there is a diarrhea and constipation seen in this irritable bowel syndrome. So there is may presence of pain in abdomen. पेन एब्डोमेन रहेगा, एब्डोमेन में पेन रहेगा ड्यू टू कभी ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है तो पेन रहेगा, कभी कम हो रहा है तो भी पेन रहेगा. तो एब्डोमेन पेन रहेगा प्लस माइनस, दैट मीन्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर सिम्टम्स एज वेल, बट एब्डोमिनल पेन विल बी देयर. सो देयर में नोटिस डायरिया होगा पेशेंट्स को, एब्डोमेन पेन विथ डायरिया, एब्डोमेन पेन विथ कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन पेन विथ यू कैन से नोजिया, वोमिटिंग एंड यू कैन से ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकता है. सो देयर आर अदर फीचर्स में नोटिस, बट एब्डोमिनल पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट symptoms seen in this irritable bowel syndrome. So IBS is a benign functional disorder leading to abdominal pain along with that altered bowel habit. It is a altered bowel habit. Bowel habit means जो भी constipation, diarrhea हो रहा है due to peristaltic movements, there is a altered you can say bowel habit. So mainly IBS is a diagnosis of exclusion. When all other possibilities are ruled out, we have done the you can say बीम एक्सरे वगैरह हमने कर लिया है, काइंड ऑफ वी हैव ऑलरेडी डन द कोलोनोस्कोपी, वी हैव ऑलरेडी डन द एंडोस्कोपी, बट देयर इज नो यू कैन से फर्दर डायग्नोसिस कि कुछ भी ऐसा रूल आउट नहीं हो पा रहा है. सो वी कैन कंक्लूड देयर इज अ इरिटेबल बowel syndrome and that's why there is a constipation and you can say there is a diarrhea. Okay, so that all investigation will come out to be normal, then only we can conclude it is a IBS. Functional disorder of GIT in which there is no structural defect, there is no stenosis, there is no ulcer. It is a just functional disorder. So patient lose stool more than 3 per day, तो डायरिया रिजल्ट हो जाएगा. एंड हार्ड स्टूल यू कैन से मोर देन 2 पर वीक में अगर पेशेंट्स को अगर यू कैन से नोटिस हुआ है तो डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन. ओके, सो मोर देन 2 लेस देन 3 पर वीक में अगर उसको कॉन्स्टिपेशन, हार्ट स्टूल ऐसा वो नोटिस कर तो डेफिनेटली देयर इज अ कॉन्स्टिपेशन. तो अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन seen in this irritable bowel syndrome, that is altered bowel habits. The functional disorder, pain in abdomen will be there. Pain is relieved after the defecation. As soon as patient passes the defecation, patient passes the stool, there is a relief of pain seen. Okay, the most important diagnosis we can say after the knowing this कि पेन पेशेंट्स को बॉवल क्लियर होने के थ्रू पेशेंट्स को पेन क्लियर हो जाता है. तो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर विच मीन्स दैट द बॉवल सिंपली डज नॉट वर्क as it should. Okay, and IBS is a common disorder that affects the large intestine, and IBS commonly causes a cramping, abdominal pain, bloating, gas, diarrhea and constipation, anorexia, loss of appetite. These are the symptoms may noticed by the patients in a IBS. Okay, so irritable bowel syndrome, abnormal contraction of our these peristaltic movements, abnormal peristaltic movements of the colon leads to the abdominal pain, leads to the constipation, leads to the altered bowel habits. So disability benefits of irritable bowel syndrome leads to the symptom. अभी कॉजेस अभी बाकी है, सिम्टम देख लेते हैं. पेन इन द एब्डोमेन, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैस, परसिस्टेंट डायरिया, अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, म्यूकोइड स्टूल, डिसेंट्री वगैरह में नोटिस एंड फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट्स. ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स नोटिस बाय द पेशेंट्स इन IBS. नाउ लेट्स सी द causative factors. तो causative factors में यू कैन सी हियर due to stress, due to altered gastrointestinal microbiome, transient infection, okay, altered endocrine metabolism, neuronal plasticity. Okay, these are the you can say etiological factors. So stress वगैरह लेने से पेशेंट को क्या होगा, स्ट्रेस है या फिर ड्यू टू अल्टर्ड एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म, तो लीड्स टू देयर इज अ
कभी सेरोटोनिन ज़्यादा होगा, कभी सेरोटोनिन कम हो जाएगा. तो ड्यू टू दैट देयर इज अल्टर्ड एबनॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. ओके, सेंसिटिविटी इंटेस्टाइन में सॉरी जो सेरोटोनिन है ऊपर नीचे उसका होना लीड्स टू द ऊपर नीचे ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एंड दैट्स व्हाई देयर इज IBS. ओके, सो दिस इज जस्ट जेनेटिक भी हो सकता है ये. इंक्रीज म्यूकोजल परमेबिलिटी. सो जस्ट फ्यू इसका ये मतलब सबको तो नहीं होता है बट इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर्स. रेयर मीन्स यंगस्टर्स में होता है ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, ड्यू टू मोर एंड मोर नॉन फाइबर डाइट कंज्यूमिंग, ड्यू टू मोर एंड मोर वेस्टर्न डाइट्स. तो पैथोजेनेसिस में नॉन ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है ये. पेन sensitivity of intestine increases due to the serotonin disturbance. Okay, so mainly in person who takes lots of stress may notice. Second probability is forceful intestinal peristaltic movement leads to the pain. Okay, so fast peristaltic movements leads to the diarrhea, but then there is a forceful intestinal contraction leads to the constipation. Okay, so serotonins neurotransmitter है ये and they increases the pain sensitivity to the intestine. Okay, so you can see the contraction, ये relax, contraction, relax, ऐसे ही peristaltic movement होता है. If very forceful contraction there will be pain. Crampy abdominal pain notice when there is a forceful contraction. Quick fast towards you can say peristaltic movements leads to diarrhea. Forceful but in coordinated peristaltic movements that is leads to the constipation. Okay, so clinical features में diagnosis is purely clinical based in sign and symptoms, but investigation may be needed to rule out other abdominal problems as well. तो sonography may be done, may be necessary, 2D को may be done क्योंकि पेशेंट को abdominal pain हो रहा है. तो किसके भी वजह से हो सकता है, due to bloating, due to some visceral organs के issues, due to some megaly. Okay, so you have to rule out by doing CT scan, by doing X-ray, by doing sonography. तो causes of IBD include abnormal GI tract movement. Okay, a change in the nervous system, communication between the GI and brain, sensory and motor disorder of the colon. Okay, dietary allergy or food sensitivities. This is again new things we have now we have learned that is not mentioned in that particular above slides. Neurotransmitter imbalance due to decreased serotonin levels, due to increased serotonin levels, increased level leads to the pain sensitivity to the intestine. Okay, so stress level again increases the irregular pattern of serotonin. So clinical feature pain or abdominal discomfort, painless diarrhea or constipation, urgency of feeling of incomplete bowel movements again and again, then bloating, loss of appetite, anorexia is a main symptom. So impression symptom get particularly relief after the defecation, so that suggests कि patients have a kind of irritable bowel syndrome. So disability benefits again, let's see this just we have discussed here. Okay, so you can see here normal wall ileum, thickened wall terminum. Okay, so this is about the diverticulosis. Thus, but what we are discussing here, IBS. So diagnosis of IBS confirmed with our all investigation will be normal. IBS diagnosis, that is a clinical, all investigation will be normal. डायग्नोसिस आपको क्लिनिकली करना है. क्लिनिकली आपको रोमांस क्राइटेरिया. ओके, देयर इज वन मोर क्राइटेरिया कॉल्ड एज रोम्स क्राइटेरिया. ओके, तो रोम्स क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, जस्ट ये देखिए अभी जस्ट मैंने आपको ये सिम्टम्स बताया. रोम्स क्राइटेरिया क्या बोलता है, रोम्स क्राइटेरिया बोलता है व्हेन देयर इज recurrent abdominal pain or discomfort at least 3 days per month in the last 3 months associated with the two or more of the following. तो ये देख सकते हो इसमें 3 day per month पेशेंट्स को लास्ट 3 मंथ में 3 day per month पेशेंट्स को हर मंथ 3 दिन आता है पेन. ऐसे ही 3 मंथ कंटिन्यू आया विद दिस 2 फीचर्स. You can say improvement with the defecation, onset associated with the change in frequency of the stools. Okay, and onset associated with the change in form or appearance of the stool. Okay, तो no worry, इसको देखते हैं. IBS with constipation, IBS with diarrhea and mixed IBS. So you can see here IBS with constipation. No worry, इसका explanation नीचे है. You can see here Rome 3 criteria for IBS. You should know ये रहना ही चाहिए more than 3 day pain in abdomen for consecutive 3 months with दो feature. Pain relieved by defecation, change in frequency, there is diarrhea and constipation. Okay, there is a change in frequency of the stool. Pain relieved by the defecation, change in frequency of the stool,
and change in form and appearance of the stool as well. So that is nothing but there, if there is one or two, if there is one or third, definitely it confirm the IBS. Okay, irritable bowel syndrome. So IBS has three mainly types: pain predominance IBS, diarrhea predominant IBS, and constipation predominant IBS. पेन predominant patients due to abdominal pain, due to कोली की पेन वगैरह रहेगा पेशेंट्स को ड्यू टू इरेगुलर पैटर्न ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. सो पेन किलर यहाँ पे लेना है. डायरिया प्रिडोमिनेंट आईबीएस में एंटी मोटिलिटी ड्रग लाइक लोपरामाइड्स यू हैव टू टेक. देन कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट आईबीएस में फाइबर रिच डाइट यू हैव टू टेक सो दैट मोर एंड मोर फ्लूइड is absorbed in the fibers and leads to the there is a relief in the constipation. Okay, the prokinetic drug is needed here. So cisapride, stool softeners, laxative you may need here. So constipation IBS. Okay, so pain predominance IBS drug of choice will be the antispasmodic drugs, that is dicyclomine. pain predominance में dicyclomine, it is an antispasmodic यानी कि muscle relaxant से. Then tablet dicyclomine 10 mg you require. Tablet meftalspaz is here. Antipsychotic drug. Okay, that is an antitryptyline. तो पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है तो you have to give the antipsychotic. और पेशेंट्स को सेडेशन वगैरह भी हम दे सकते हैं. तो एंटीट्रिप्टिलिन में दे सकते हैं. यहाँ पे ट्रिप्टोमर एक इसका ब्रांड है. ट्रिप्टोमर 10 mg यू कैन गिव. HS वगैरह में रख सकते हैं. एट बेड टाइम यू कैन सजेस्ट द पेशेंट. यू कैन सी हियर there is a kind of combination of also dicyclomine if with amitriptyline is also combined drug market में available है. diarrhea predominant IBS में to decrease the peristaltic movement there is a drug of choice is a loperamide. Okay, 2 milligram you may give on the basis of SOS. Okay, if necessary. constipation predominant IBS में there is a fiber rich diet, stool softeners and prokinetic drug is needed. fiber rich diet, it is for non pharmacological management. We can give the stool soft. We can do the stool soft by giving the fiber containing diet. Okay, stool softener में laxative वगैरह needed है. We have a number of laxative syrups, Duflac, Crimafin, Goodlax. We have a laxative syrups. prokinetic drug में there is a cisapride, mosapride. They are the prokinetic. They just you can say increase the peristaltic movements and leads to the kind of relievement of the constipation. Okay, so you can see here intestinal movements को कम करता है. It has a kind of loperamides, and again we have a number of brand available of loperamide. Okay, so cisapride, mosapride, they are the prokinetic drug. They increase the intestinal movements and gut transit time get decreases and gut empty is increases and leads to the constipation relief. Okay, so tablet you can say cisapride 5 mg and again the 2D, BD, TID or QID basis पे you can take to relieve the constipation. Okay, so pain predominant IBS, constipation predominant IBS and diarrhea predominant IBS, they are the three mainly type of our IBS. Okay, so that is all about for our IBS. You should know the IBS difference between the IBS and IBD. So already we have discussed that. Okay, so that is all about for today.